Good morning everyone. Today we are going to discuss about the Gauss elimination method, that is unit 4 of programming in C book. So let us start with the method Gauss elimination method. Gauss elimination method. Now let us consider the system of equations, that is a11 x1, a12 x2, a13 x3 is equal to b1, a21 x1, a22 x2, a23 x3 equal to b2, a31 x1, it is a31, a32 x2, a33 x3 equal to b3. Now you can see here it is b1, b2, b3. Since the coefficients are non-zero, so it is known to be as non-homogeneous equation. If thus equations, if the RHS have 0, 0, 0, then it is known to be as homogeneous equation. So how you will do this method? What is the method is about? You have to eliminate one of the coefficient, whether you can take the coefficient of x1, whether you can take the coefficient of x2, or you can take the coefficient of x3. You have to eliminate the coefficient of x1 from equation number 1 and 2. If you are selecting the coefficient of x1, then you have to eliminate x1. If you are taking the coefficient of x2, then you have to eliminate the coefficient of x2 from equation number 1 and 2. So the method is about, you have to calculate R1. R1 is calculated by coefficient of x1 in equation number 2. This is equation number 1, this is equation number 2, this is equation number 3. Let me mark here. This is equation number 1, this is equation number 2, and this is equation number 3. So R1 is calculated by coefficient of x1 in equation number 2 divided by coefficient of x1 in equation number 1. कोफिशेंट ऑफ x1 के कोफिशेंट ऑफ x1 इन इक्वेशन नंबर 2 को हम कोफिशेंट ऑफ x1 इन इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करते हैं. जो भी इसका आंसर आएगा उसको हम फर्स्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसके बाद माइनस करके हम उसको एलिमिनेट करेंगे. ऐसे ही सिमिलरली हम R2 कैलकुलेट करते हैं बाय डिवाइडिंग कोफिशेंट ऑफ x1 इन इक्वेशन नंबर 3 divided by coefficient of x1 in equation number 1. इक्वेशन नंबर 3 के कोफिशेंट को इक्वेशन नंबर 1 के कोफिशेंट से हम डिवाइड करेंगे. जो भी इसका आंसर आएगा उसको इक्वेशन नंबर 1 से मल्टीप्लाई करके एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 हम x1 को एलिमिनेट कर देंगे. लेट अस हैव अ लुक ऑन द एग्जांपल्स कि हम इसको कैसे करेंगे. Now, using Gauss elimination, question is find the solution by using Gauss elimination method. So, equation is 2x plus y plus 4z equal to 12. Then 4x plus 11y minus z equal to 33. 8x minus 3y plus 2z equal to 20. Mark this as equation number 1, 2 and 3. Now, you just calculate R1. R1 कैलकुलेट करने का तरीका, कोफिशेंट ऑफ x आपकी अकॉर्डिंग है. इफ़ यू वांट टू टेक y, इफ़ यू वांट टू टेक z, इट डजेंट मैटर कि आप पहले x ही चूज़ करें. आप y भी सिलेक्ट कर सकते हैं, z भी सिलेक्ट कर सकते हैं. सो इफ़ यू आर सिलेक्टिंग x, आई एम सिलेक्टिंग x, तो आई एम डिवाइडिंग कोफिशेंट ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय कोफिशेंट ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1. मैं x एलिमिनेट करने जा रही हूँ इस इक्वेशन में, तो मैं x का कोफिशिएंट सेलेक्ट कर रही हूँ. इफ़ आई एम गोइंग टू सिलेक्ट कोफिशिएंट ऑफ y, तो मैं y के कोफिशिएंट को डिवाइड करूँगी. सो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है इक्वेशन नंबर 2 में, दैट इज़ 4. यहाँ पे क्या है x का कोफिशिएंट इक्वेशन नंबर 1 में, दैट इज़ 2. सो 4 डिवाइडेड बाई 2, हाउ मच यू आर गेटिंग, दैट इज़ 2. ना इक्वेशन नंबर 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर इक्वेशन नंबर 2 से सब्ट्रैक्ट कर दें. सो व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 यू विल बी गेटिंग 4x प्लस 2y प्लस 8z इक्वल टू 24. आपके पास सेकेंड इक्वेशन क्या है, लेट मी मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 4. सब्ट्रैक्टिंग, जस्ट राइट डाउन, सब्ट्रैक्टिंग equation number 4 from
इक्वेशन नंबर 2 आप सब्ट्रैक्ट कर दें. सो वाइल यू आर सब्ट्रैक्टिंग, इक्वेशन नंबर आपके पास कितना है? इक्वेशन नंबर 2 इज 4x प्लस 11y प्लस माइनस z माइनस इक्वेशन नंबर 4 is 2y plus 8z equal to, so it is 33 minus 24. Now you just subtract it. While subtracting you will be getting 4x plus 11y minus z, बाहर माइनस है अंदर के साइन, चेंज माइनस 8z, 33 minus 24 that is 9. 4x cancel, 11y that is 9y minus 9z equal to 9. So y minus z equal to 1. Mark this as equation number 5. Now you have successfully eliminated x from equation number 1 and 2. Now to eliminate x from equation number 3 and 1, just calculate R2. How will you calculate R2? Coefficient of x in equation number 3 divided by coefficient of x in इक्वेशन नंबर 1. सो कोफिशिएंट क्या है x3 का, x का इक्वेशन नंबर 3 में, दैट इज 8 एंड इट इज 4. सो 4 इट इज 2. सो 2 डिवाइडेड बाय 8 इट इज इक्वल टू 4. नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 4. इक्वेशन नंबर 1 क्या थी आपकी? 2x प्लस वाई प्लस 4z इक्वल टू 12. आपने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 4 से. सो इट विल बी 8x प्लस 4y plus 16z equal to 48. Now you mark this as equation number as 6. Now you have to subtract equation number 6 from equation number 3. So subtract equation number 6 from equation number 3. As you can see here, your equation number 3 is 8x minus 3y plus 2z equal to 20. And you have get equation number 6 as 8x plus 4y plus 16z equal to 48. Now you have to subtract both the equation to eliminate x from both the equation. So I have written subtract equation number 6 from equation number 3. Now carry forward subtraction, that is 8x plus 4y plus 16z, which will be subtracted from the equation number 3 is 4x plus 2y plus, equation number 3 is 8x, I am writing again, 8x minus 3y plus 2z minus equation number 6 is 8x plus 4y plus 16z, which is equal to 48, that is 20 minus 48. So now changing the sign again, plus 3y 2z minus 8x minus 4y minus 16z is equal to 20 minus 48, which is equal to minus 28. Now cancelling 8x minus 7y minus 14z, which is equal to minus 28. Now taking 7, 14 and minus 28 as common, I am taking 7 common from here, 7 common from here, minus 7, that is y plus 2z equal to 4. So mark this as equation number 7. Now similarly you have to eliminate equation 1 y from equation number 7 and from equation number 5. As you can see here, equation number 5 is y minus z equal to 1. Equation number 7 is y plus 2z equal to 4. So you have to eliminate y from both the equation. I am just calculating R3 now. R3 will be calculated by coefficient of y in equation number 7 divided by coefficient of y in equation number 5. तो y का coefficient क्या है इसमें? 1 1. So I am getting 1. So I will multiply equation number 5 क्या थी आपकी? That is y minus z equal to 1. ये equation number 5 थी. इस equation को आप किससे multiply कर देंगे? 1 से. So the equation will remain same. Then you have to subtract equation number 5 from equation number 7. So the equation will be y minus z equal to 1. That is 5 equation.
and equation number 7 is y plus 2z equal to 4. Now just subtract equation number 7 from, we are subtracting equation number 7 from equation number 5. So it is y minus z minus y plus 2z equal to, that is 1 minus 4. So y minus z, it is y minus z minus y minus 2z equal to minus 3. So it will be minus 3z equal to minus 3. Then z equal to 1. So we got the value z equal to 1. Now you can substitute this value. Now revert back. Now you can substitute this value in equation number 5 or equation number 7 to get the value of y. I am substituting this value in equation number 5. As you can see here, I got my z as 1. So I will be substituting in place of z as 1. So it will be y minus 1 equal to 1. So the value of y is 2. Now you can calculate y equal to 2. Again, if you want to calculate x, then just go back and substitute value in equation number 1 or equation number 2 or equation number 3. Now I am substituting in equation number 1. As you can see, equation number 1 is 2x plus y plus 4z equal to 12. Substituting y as 2, z as 1, I will calculate my x also. So I am substituting, my equation is 2x plus y plus 4z equal to 12. 2x, value of y is 2, value of z is 1. So it is 2x, 4 plus 2, 6. So I calculated my x as 3. As you can see, by Gauss elimination method, we are able to calculate the value of x, y, z or whatever